Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 10th lecture of the series of CPC and we are continuing with section 16. In this we will start with clause E, 16E. In clause E they are saying for compensation for wrong to immovable property. Now it is not a suit for any performance etc. It is a suit for compensation means what? Damages. Damages for wrong to immovable property. अब इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें डैमेजेस तो आप क्लेम नहीं कर रहे। अब हो सकता है डैमेजेस भी क्लेम करो और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम करो, तो डैमेजेस वाला पार्ट इसमें आ जाएगा और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला पार्ट क्लाउज डी में चला जाएगा। सो इट कैन बी बोथ द क्लाउजेस। अब डैमेजेस फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज मीन्स व्हाट? किसी ने आपकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर दिया है एंड ही हैज कॉज्ड सम रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सूट में एक आप रिलीफ क्लेम करोगे इंजंक्शन का, तो एक रिलीफ तो आप इंजंक्शन का क्लेम करोगे टू रिमूव हिम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, मैंडेटरी इंजंक्शन। दूसरा आप क्लेम करोगे डैमेजेस फॉर वॉट एवर हार्म इट वाज कॉज्ड। अब ये डैमेजेस वाला मैटर है दैट विल फॉल अंडर क्लाउज ई एंड इंजंक्शन वाला मैटर विल फॉल अंडर क्लाउज डी, और एक सूट में दोनों क्लाउज भी लग सकते हैं। डैमेजेस मीन्स व्हाट? द कंपनसेशन फॉर द लॉस यू हैव सफर्ड. If someone have trespassed your property and you claimed your property back, तो उसके लिए आप रिकवरी सूट कर लो, मैंडेटरी इंजंक्शन कर सकते हो या फिर रिकवरी सूट कर लो, और साथ में क्योंकि उसने प्रॉपर्टी का लॉस किया है यू कैन क्लेम डैमेजेस. सो इट कैन बी रिकवरी अंडर क्लाउज ए एंड डैमेजेस अंडर क्लाउज ई. सिमिलरली सपोज समवन हैज कॉज्ड मिसचीफ अपॉन द प्रॉपर्टी. किसी ने मिसचीफ किया है प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी को उसने लॉस किया है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी पर उसने कब्जा वगैरह नहीं किया तो रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट नहीं करोगे, लेकिन जो भी उसने लॉस कॉज किया विल यू नॉट गो फॉर डैमेजेस कॉम्पनसेशन? आंसर इज यस. तो डैमेजेस कहाँ फॉल करेगा विद रेस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी? इट विल अंडर क्लाउज ई. सिमिलरली समवन कमिटेड द न्यूसेंस एंड बाय द न्यूसेंस ही हैज एडवर्सली अफेक्टेड योर प्रॉपर्टी. राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी अपनी जगह है ही है. So by the nuisance he has adversely affected the property. If someone has caused nuisance to my property, अब right to enjoy the property तो अपनी जगह है ही है. अब जो right to enjoy the property है that will fall under clause D. My right to enjoy the property, my right to enjoy this immovable property, that is right pertaining to this immovable property. And if someone causes nuisance, then my right falls under clause D. लेकिन उसी में उसके न्यूसेंस की वजह से जो लॉसेस हुए हैं मुझे, उसके लिए कॉम्पनसेशन जो मैं क्लेम करूंगा दैट विल फॉल अंडर क्लाउज ई. इसको आप लिख लीजिए. राइट, इन द केसेस ऑफ न्यूसेंस द राइट टू पीसफुली एंजॉय द प्रॉपर्टी इज वायलेटेड एंड अगेंस्ट सच वायलेशन एन इंजंक्शन सूट विल बी फाइल्ड which will fall under section 16 clause D. On the other hand, because of the said nuisance, whatever losses were caused to the plaintiff for that, the suit for damages will be filed, which will fall under section 16 clause E. 16 clause E मतलब उसी में अगर राइट क्लेम कर रहे हो तो डी में फॉल कर जाएगा, उसी में अगर रिकवरी कर रहे हो तो ए में फॉल कर जाएगा, और उसी में अगर डैमेजेस क्लेम करोगे मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड that will fall under clause E. So what I am saying, in the same suit, more than one clauses can overlap, depending upon what relief you are claiming. More than one clauses can overlap, depending upon what relief you are claiming. Now next you get to clause F. Clause F, that is suit for recovery of movable property actually under distraint or attachment. Suit for recovery of movable property actually under distraint or attachment. What is meant by distraint and what is meant by attachment? The recovery of movable property under distraint or attachment. One example of attachment is Order 38. Attachment of a movable property under Order 38 by the order of the court. For example, टैक्सी स्टैंड की सारी टैक्सियाँ अटैच कर दी,
दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इमूवेबल की नहीं, मूवेबल की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट के पास पावर है सीपीसी में कि कुछ कंडीशन में वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। अटैच मतलब वो प्रॉपर्टी कोर्ट की कस्टडी में आ जाए, रख ले, और उसके लिए एक देख रेख के लिए एक रिसीवर अपॉइंट हो जाएगा, एंड दैट प्रॉपर्टी विल बी इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट। सो बिफोर द जजमेंट और आफ्टर द जजमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जीक्यूशन, such an attachment of the property can be done. So that is attachment. Fine. लेकिन मान लो there is a suit between A and B going on. अब सूट है मान लो एक टैक्सी स्टैंड को लेकर, जो टैक्सी स्टैंड पे जितनी भी गाड़ियाँ उसको लेकर, फॉर एग्जांपल। अब ए ने मान लो एप्लीकेशन डाला कोर्ट में कि अगर गाड़ियों को आप अपने कब्जे में नहीं लोगे तो बी गाड़ियाँ बेच देगा। अब कोर्ट टू एग्जामिन दैट बी इज अबाउट टू सेल द कार्स, और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि तुम गाड़ियों की कीमत के बराबर कोर्ट में सिक्योरिटी पेपर्स जमा कर दो, प्रॉपर्टी पेपर्स। मान लो बी के पास दूसरे प्रॉपर्टी पेपर्स है नहीं, फिर कोर्ट ने क्या किया, सभी गाड़ियों को अटैच कर लिया। अटैच कर दिया मतलब रस्सी से बांध नहीं दिया, अटैच कर दिया मतलब कोर्ट हैज सेड दैट दीज कार आर अटैच्ड, एंड एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया who will taking care of the car. So this is the attachment. Now suppose there is an attachment order regarding some movable property, but later on court taken back the attachment order. Attachment order court ने वापस ले लिया. After some time, still the receiver is not giving the property back. उसके कब्जे में कोर्ट ने प्रॉपर्टी डाला था आफ्टर अटैचमेंट, और कोर्ट ने अटैचमेंट ऑर्डर वापस ले लिया, फिर भी द प्रॉपर्टी इन हुज कस्टडी दैट इज गिवन बाय द कोर्ट, दैट पर्सन इज नॉट गिविंग द प्रॉपर्टी बैक टू द प्लेंटिफ। इन सच अ केस वेयर विल बी द सूट विल फाइल्ड। वैसे तो ऐसे केसेस में सूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन डायरेक्टली फाइल एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट। लेकिन अगर सूट फाइल करना है तो कहाँ फाइल करोगे? वेयर एवर दैट अटैच्ड प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। That is attachment. What is distraint? Now, distraint is basically a situation where the person holds some property of the other person in lieu of some debt. अब मान लो मेरा आपके ऊपर कोई लॉफुल क्लेम है और उसके बदले में मैंने आपकी एक प्रॉपर्टी कब्जे में रख ली, in lieu of the debt, in lieu of the payment that you have not paid to me. That is called the property in my possession under distraint. आपकी प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में है because you are liable to pay some money to me and you are not paying the money to me, and therefore I am holding the property in my lien. Lien means कब्जा, प्रॉपर्टी को धारण करना, कब्जा करना। I am holding the property in my lien and I will hold it unless you make the payment. अब हुआ क्या, आपने क्लेम किया कि that you do not have the lien upon the property, you do not have the right to lien upon the property, and I am holding the property in lieu of the debt. Now you file a suit against me to get the property released from me and to take back the possession. Now I am claiming the right to lien because of the fact that I claim that you makes a payment to me. तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, जो मेरे पास प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट है, डिस्ट्रेंट मतलब इन ल्यू ऑफ सम पेमेंट दैट यू आर लायबल टू मेक टू मी। ये जो प्रॉपर्टी है इज इन माई पोजेशन, दिस प्रॉपर्टी इज इन माई पोजेशन अंडर डिस्ट्रेंट, and you file a suit against me to claim the property back from the possession, to claim back property from my possession. That is what is called the recovery of property from distraint. देखो इसको कहानी की तरह समझो। Suppose there is some movable property of which B is in possession. ये प्रॉपर्टी एक्चुअली बिलोंग करता है A को, it belongs to A. अब B claims that A is liable to pay me 10 lakh rupees. ए पर मेरे 10 लाख रुपए बकाया है, and since he is not giving money to me, I keep possession of this movable property. I keep possession of this movable property. अब कुछ भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स हो सकते हैं। ए के पास बहुत सारे गाय भैंसे थी, उनको कब्जे में ले लिया, ये पैसे दो और तब मैं वापस करूँगा। अब ए ने सूट किया बी के ऊपर कि मेरी जो गाय भैंसे कैटल है वो वापस चाहिए। बी says that I have the right to lien, I have the right to hold the cattle because he has not made the payment. Now here what is the suit for?
suit is for the recovery of the movable property out of what? Out of the distraint in which B is holding the property. अब B क्यों होल्ड कर रहा है? B कह रहा है कि मेरा पेमेंट ड्यू है. B is saying that a payment is due and therefore I have a right to lien upon. Lien मतलब कब्जा रखने का अधिकार, प्रॉपर्टी को अपने पास धारण रखने का अधिकार. वो कह रहा है कि मेरे पास राइट टू लियन है इस प्रॉपर्टी पर, क्योंकि मेरा जो लोन है वो ए ने पे नहीं किया. अब हेयर सिंस ए हैज फाइल्ड द सूट फॉर क्लेमिंग द possession of the property, recovery of the possession of the movable property from distraint under which B has kept it, that will be fall under clause F. अब उसी तरीके से मान लो B was the receiver and property was attached. अब कोर्ट ने अटैचमेंट ऑर्डर वापस ले लिया, फिर भी B is not giving back the property back to A. अब this property is under attachment, now it is illegal. A will file a suit for the recovery of the property from B. B is a receiver. Now that suit will be filed where? Wherever the property of attachment is lying. जहाँ भी प्रॉपर्टी है वहाँ पे आप सूट कर सकते हो. So is that fine? एक बार 16 को पूरा देख लें. Section 16 में basically it is about immovable property and some part of section 16 is also related to movable property. Immovable में एक तो है आपका रिकवरी सूट फर्स्ट में, दूसरा है पार्टीशन सूट, तीसरा है फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन और एक है चार्ज. देन उसके अलावा है एक कंपनसेशन टू लॉस काउज, दैट इज क्लाउज ई. उसके अलावा देयर इज क्लाउज डी, दैट इज एनी अदर राइट. अब अदर राइट में कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवाए. फॉर एग्जांपल एविक्शन, इंजंक्शन, डिक्लेरेशन, easementary right, specific performance of a contract with respect to an immovable property, and finally in clause F we saw that the suit for recovery of the movable property from what? From a person who has got the property legally now under attachment. अब लीगली भी हो चाहे अटैचमेंट में, तो अटैचमेंट ऑर्डर को भी तो आप चैलेंज कर सकते हो. मान लो कोर्ट ने अटैचमेंट ऑर्डर पास किया और आपने अटैचमेंट ऑर्डर को चैलेंज कर दिया रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए और सूट किया. तो रिकवरी के लिए आपने सूट किया आफ्टर चैलेंजिंग द अटैचमेंट ऑर्डर. अटैचमेंट ऑर्डर चैलेंज करने के बाद आपने रिकवरी के लिए, प्रॉपर्टी रिकवरी के लिए सूट किया, तो वो भी इसी में आएगा. या फिर प्रॉपर्टी इज अंडर समवन अदर डिस्ट्रेंट. डिस्ट्रेंट मीन्स होल्डिंग द प्रॉपर्टी इन lieu ऑफ सम पेमेंट. तो आप सूट कर रहे हो प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए. द सूट विल बी फाइल्ड वेयर एवर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द सूट. अब देखो अटैचमेंट अब आगे पढ़ोगे आप तो समझ में आएगा आपके. वैसा है क्या, ऑर्डर 38 है जैसे आपके पास इन CPC, उसमें मान लो ए और बी के बीच एक सूट चल रहा है. अब बी के पास मान लो कोई एक प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर तो मूवेबल ही देखना पड़ेगा. एफ में कोई एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके लिए ए ने बी पर सूट किया, रिकवरी या पोजेशन या वॉट एवर, ही हैज फाइल्ड अ सूट. अब बी जो है, बी उस प्रॉपर्टी को बेचने या डिस्पोज ऑफ करने की तैयारी कर सकता है और ए ने उसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाला कि अगर तुरंत अटैचमेंट ऑर्डर पास नहीं हुए तो बी प्रॉपर्टी को बेच देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा. तो फिर अगर प्रॉपर्टी बिक गई या फिर डिस्ट्रॉय हो गई तो सूट यूजलेस हो जाएगा. So the court in such cases will pass a notice to B and ask him to show cause as to why not his property should be attached, and if he is not able to explain as to why not it should be attached, then the court will ask him to deposit the security in the court so that if he disposes the property, that money can be collected from the property he has kept in security. And if he does not do that, the court will pass an order for अटैचिंग द सेड प्रॉपर्टी. और ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी अटैच हो जाएगी और एक ऑर्डर 40 में रिसीवर अपॉइंट हो जाएगा उसके लिए. रिसीवर विल बी अपॉइंटेड इन ऑर्डर 40 एंड ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. अब हो सकता है थोड़े समय बाद कोर्ट ने अटैचमेंट ऑर्डर वैकेट कर दिया मतलब वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया,
Now this receiver has to release the property to A, sorry, in this case to B, and the receiver is not relieving the property. Now B will file the suit to claim the property. B will file the suit against the receiver to claim the property from the attachment. So that suit will be filed wherever the property is situated. तो ये वैसे ऑर्डर 38 ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, पर जब पढ़ोगे आप ऑर्डर 38 तो समझ में आ जाएगा, आगे पढ़ोगे तो और भी चीज़ें आएंगी। वैसे फॉर नाउ ये मैंने बता ही दिया। अब नाउ वी हैव टू मूव इनटू द प्रोवाइजो। तो अभी तक हमने क्या देखा, द सूट विल बी फाइल्ड वेयर एवर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। नाउ द प्रोवाइजो सेज इज कि आप सूट वहाँ पर भी फाइल कर सकते हो जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है, या फिर डिफेंडेंट नौकरी करता है, काम करता है, वर्क करता है, या फिर डिफेंडेंट बिजनेस करता है। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से सूट सिर्फ वहाँ पर फाइल नहीं होगा जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में सूट वहाँ भी फाइल कर सकते हो जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है, काम करता है, या फिर बिजनेस करता है। और उसके ग्राउंड्स दे रखे हैं प्रोवाइजो में। अगर प्रोवाइजो लागू होगा तो सूट आप प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वर्क और बिजनेस पे भी कर सकते हो, apart from the place where the property is situated. So read that. Read, provided that a suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of the defendant, मतलब वो जो property immovable that should be in the possession of the defendant, held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain. So here in the proviso, they are simply declaring that the suit can be filed not only where the property is situated. अब सूट कौन सा, 16A से लेकर E तक, F तो मूवेबल है तो 16A से लेकर E तक, तो 16A से लेकर जो E तक सूट हैं तो वो आप जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पर नहीं, बल्कि जहाँ डिफेंडेंट रहता है, वर्क करता है या बिजनेस करता है, तो सिर्फ वहाँ पर नहीं जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, बल्कि जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है, वर्क करता है, बिजनेस करता है, वहाँ पर भी सूट फाइल कर सकते हो। अगर इफ इट इज़ पॉसिबल दैट रिलीफ कैन बी ऑब्टेन्ड entirely through his personal obedience, entirely through the personal obedience of the defendant. So they are simply saying, पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के कब्जे में होनी चाहिए, the property should be in the possession of the defendant or in the possession of his agent, शुरू में लिख दिया, held by or on behalf of the defendant means defendant himself holding the property or any agent of the defendant is holding the property. Then they are saying the relief can be entirely obtained by personal obedience. इसका क्या मतलब होगा, अगर ये प्रूव हो जाए कि that particular suit relief claimed can be entirely claimed to the personal obedience of the defendant, then the suit can be filed not only the place where the property is situated but also the place where the defendant resides, work or done business. तो इसमें लिख लो पहले आप, in order to apply the proviso, it is essential first to prove that suit falls under section 16 clause A to E, under clause A till E 16 में फॉल करेगा तब तो आप proviso में जाओगे. So the suit should be for the recovery or whatever falling under section 16A till E, clause A to E. Then it has to be examined as to whether the relief sought in the suit can be obtained entirely through personal obedience of the defendant or not. If yes, then the suit can be filed
not only where the property is situated, rather also where the defendant, अब ये यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, आप पूरा कर लेना, एक्चुअली एंड वॉलंटरली वगैरह लिख लेना आप, where defendant resides, works or does business, where the defendant resides, work or does business. Then आगे लिखो, the proviso will apply only if the said immovable property is in the possession of the defendant or his agent. Fine. What is the main point we need to examine? So the only thing need to examine is what is meant by obtaining the relief entirely by personal obedience of the defendant. So what is the meaning of the relief can be obtained entirely from the personal obedience? अब इसके लिए आपको एग्जीक्यूशन समझना पड़ेगा, वो डिटेल में अभी हम नहीं समझ सकते, बट फॉर नाउ एज ऑफ ए स्टोरी इफ यू अंडरस्टैंड, मान लो मेरे पास आपके खिलाफ एक डिक्री है, एंड डिक्री इज फॉर 10 लाख रुपीज. डिक्री मतलब इन द सूट आई हैव ऑब्टेन द डिक्री of 10 lakh rupees and I have to obtain that amount from you. Fine. So अब when I go for the execution of the degree, तो ये degree execute कैसे होगा? So as a layman you understand here, because you have not read the execution, the degree will be executed, क्योंकि मैं ही बताऊंगा कोर्ट को that how do I want to execute my degree. So I can tell the court that this person shall be arrested. अरेस्ट करके उसको जेल में रखो, और जेल में रखोगे तो वो अपने आप पैसे दे देगा. So one choice I have is defendant should be arrested, and by getting the defendant arrested, he will be paying the money to me. और I have the option, मान लो defendant जो है उसने किसी और को कर्जा दे रखा है, तो मैं अटैचमेंट ऑफ डेप्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि उसका जो कर्जा है किसी और को जो दे रखा है तो उसको अटैच कर दो और वो पैसे मुझे डायरेक्टली दे दो. सो आई कैन गो फॉर द अटैचमेंट ऑफ डेप्ट. तो कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं, जैसे वो उसका कर्जा अटैच करके वो पैसे मुझे दे दो. तो द अटैचमेंट ऑफ डेप्ट, या फिर अरेस्ट टू द डिफेंडेंट, या फिर दे कैन अटैच सम प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट. कोई स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी नहीं उसकी कोई भी प्रॉपर्टी जो मैं स्पेसिफाई करूँगा कि ये प्रॉपर्टी अटैच कर लो, तो वो प्रॉपर्टी कोर्ट अटैच कर देगी. अगर फिर भी पैसे नहीं देता है तो उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो पैसे निकलते होंगे वो पैसे हम ले लेंगे. नाउ इन दीज केसेस जो डिग्री का एग्जीक्यूशन है वो किसी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी पर इंसिडेंटल नहीं है कि कोई सूट प्रॉपर्टी है उस पर इंसिडेंटल हो. सो इन दीज केसेस द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री इज नॉट इंसिडेंटल अपॉन सम स्पेसिफाइड सूट प्रॉपर्टी, rather the degree का execution is incidental upon defendant himself and he can be arrested. मतलब क्या कि हम उसको पर्सनली अरेस्ट करके बाउंड कर सकते हैं कि वो पैसे दे, या फिर उसकी पर्सनली किसी प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल कर सकते हैं कि वो पैसे दे. पर्सनली हम उसका कोई डेप्ट अटैच कर सकते हैं कि हम पैसे वसूल कर सकें. सो दीज मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री आर कॉल्ड पर्सनल ओबीडियंस. पर्सनल ओबीडियंस मतलब क्या, दे कैन बाइंड द डिफेंडेंट टू पे द मनी. लेकिन अगर मान लो डिक्री इज फॉर रिकवरी ऑफ सम पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट अ मनी डिक्री, इट इज़ फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी. अब बताइए इसके लिए हम डिफेंडेंट को अरेस्ट करेंगे या उसकी कोई प्रॉपर्टी अटैच करके सेल करेंगे, या फिर जिस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए डिक्री है उस प्रॉपर्टी का कब्जा पुलिस के थ्रू लेकर प्लेंटिफ को दिया जाएगा. नो टेल मी, is there any related of arresting the defendant in the case or attaching or selling some other property? No, because the degree is for recovery of a specified property, and therefore the execution of degree also will be incidental upon that specified property. तो यहाँ पर we cannot obtain the degree or relief, we cannot obtain the relief from the defendant by personally binding him by arrest or attachment of some property, etc. Rather, we will have the decree execution incidental upon the said property, और उस प्रॉपर्टी का कब्जा दिलवाया जाएगा. और उसी तरीके से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ऑफ सम इमूवेबल प्रॉपर्टी, एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड के लिए तो चलो उसको पर्सनली बाउंड कर दोगे,
मान लो अगर वो कहता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो आप उसको पर्सनली अरेस्ट करके उससे साइन करवा सकते हो, या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी अटैच कर लो, कोई भी प्रॉपर्टी अटैच कर लो, तो उस मजबूरी में वो साइन करेगा। तो एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड तो आप उससे साइन करवा लोगे बाई पर्सनली बाइंडिंग हिम। लेकिन उसके बाद जब पोजेसन देगा वो, द पोजेसन यू हैव टू ऑब्टेन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो पोजेसन कैसे लोगे? पोजेसन लेने के लिए आपको उसे पर्सनली बाइंड करने की जरूरत नहीं है। द कोर्ट विल एग्जीक्यूट द डिग्री राइट ऑन द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से उसको डिस्पोजेस करके आपको प्रॉपर्टी दिया जाएगा। सो द प्रॉपर्टी के पोजेसन वाला पार्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाई पर्सनली बाइंडिंग हिम थ्रू अरेस्ट। Rather, the execution of that degree of possession will be incidental directly upon the property. Rather, the execution of the degree of possession is directly incidental upon the property. इस तरीके से समझो आप कि प्रॉपर्टी पर गए बिना, प्रॉपर्टी पर जाकर कब्जा लिए बिना आप डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। So where the ultimately decree is incidental upon the defendant in person or upon the specified property. So these examples are the examples where the decree cannot be executed and the relief cannot be obtained entirely by pure personal obedience. But in other examples like money claim वगैरह, जैसे आप क्लाउज एफ में क्लेम करते हो, या फिर सपोज ऑफ डैमेजेस, जब आप डिक्री को एग्जीक्यूट करते हो फॉर डैमेजेस, सपोज यू आर हैविंग अ डिक्री फॉर डैमेजेस, तो डिक्री फॉर डैमेजेस में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कुछ नहीं करना, he has to pay the money to you। तो वो पैसे वो देगा, अगर नहीं देता है तो उसको अरेस्ट कर लो, फिर भी पैसे नहीं देता है तो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, नॉट दिस प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी अटैच कर लो और सेल कर लो। सो दीज आर द केसेस ऑफ पर्सनल ओबीडियंस। सो क्लॉज ई में जब आप करते हो बाय मिस्टेक आई हैड सेड एफ, इट इज फॉर ई, व्हेन यू क्लेम compensation or damages, you can go for the personal obedience. So these are the cases of personal obedience. Normally, partition, foreclosure, redemption, sale, etc. These cannot be said to a case of personal obedience because these cases are all related to specified property, even charge also. But in the cases of compensation, when you claim compensation, if the property is in his possession और उसने उस प्रॉपर्टी को डैमेज किया है और आपने उसके लिए आपने कंपनसेशन फाइल किया है, और कंपनसेशन डैमेजेस मिल रहा है, डिग्री मिल गई है आपको, अब उस कंपनसेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी पर जाकर डैमेजेस क्लेम करो। डैमेजेस कैन बी क्लेम फ्रॉम हिज पॉकेट। उसके बैंक अकाउंट से आप पैसे निकाल सकते हो, उसका कोई डेप्टर है तो उससे आप पैसे ले सकते हो। सो इन दीज केसेस, खास करके कंपनसेशन वाले केसेस में, provided the property was his in possession, you can always go for personal obedience, and therefore the proviso had very limited application because in most of the clauses the decree has to be executed on the property itself. You will find that in most of the clauses the decree will be executed on the property itself, और जब भी property itself पे decree execute करोगे, that will not be a case of personal obedience. So particularly in the clause of E, the compensation is involved. In those cases, you can personally bind him to give the money. You personally bind him to pay the money, and that is what is called the personal obedience. और उसमें भी सारे केसेस नहीं, उसमें भी सिर्फ 2 केसेस, जबकि प्रॉपर्टी, उसमें भी वो केसेस जिसमें प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है, only those cases in which the property is in his possession, because they are writing clearly that the property is held by the defendant or on behalf of the defendant. Even in the cases of charge also, because that is related to particular property, specified property, so you cannot bind him personally, because the charge is upon the specified property and income out of that property. Therefore, the decree has to be ultimately executed with respect to the income of that specified property only. So it will not be a case of personal obedience. अब मेन जो पॉइंट आपको समझना है इसमें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद रेस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी विच फॉल्स अंडर 16। अब वैसे तो हम कहेंगे दैट इट शुड अप्लाई टू 16 ऑल क्लाउजेज ए टू ई टिल ई, बट प्रैक्टिकली अगर अदर क्लाउजेज में आप देखोगे, देन द डिक्री हैज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द प्रॉपर्टी इटसेल्फ, तो प्रैक्टिकली it will apply on 16, it will fall under 16E only,
वैसे अदरवाइज कहने को तो हम कहेंगे इट विल अप्लाई ऑन ऑल क्लाउजेज ए टू ई। नाउ कम बैक अगेन टू द मेन पॉइंट। जो मेन पॉइंट आपको समझना है इसमें, द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट विद रेस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज फॉल्स अंडर which falls under 16D, whether it can be a case of personal obedience. Specific performance of the contract with respect to sale of the immovable property which falls under the 16D, will that be a case of personal obedience? अब it will be partly yes and partly no, क्योंकि partly yes in the sense execution of the sale deed is yes, but ultimate जो डिग्री का execution है वो तो possession पे है, and therefore ultimately it will be no. Ultimately it will be no. और ये जो हर्षद चमनलाल मोदी वाला केस था उसमें ये सवाल पूछा था, is it a case of proviso or is it a case of 16D? And the court clearly held that since the execution of the sale deed alone is not expected here, rather the transfer of the possession is also expected. So ultimately the execution of the decree will be falling upon on the property itself, and therefore it cannot be obtained by personal obedience. अब देखो एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड तो करवा सकते हैं पर्सनल ओबीडियंस से, लेकिन उसके बाद पोजेसन भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि अल्टीमेटली तुमको पोजेसन ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वो आप पर्सनल ओबीडियंस में नहीं करा सकते गिरफ्तार करके या किसी और तरीके से आप, लेकिन आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी पर जाकर ही वहाँ पर जाकर आप कब्जा लिया जा सकता है। And therefore the court held that it will not fall under the personal obedience, and the suit can be filed only where the property is situated. तो इसको आप लिख लीजिए, that is a very important point. Therefore I am saying that practically proviso will apply on clause E only, but we should not say that. We should say that the proviso will apply to all A to E, A till E. बट प्रैक्टिकली जब हम जाते हैं अदर क्लाउजेज में एक्सेप्ट ई, तो आप यू विल फाइंड दैट समवेयर द डिग्री विल बी एग्जीक्यूटेड अपॉन द प्रॉपर्टी ओनली, राइट। द प्रोवाइजो विल अप्लाई ओनली इफ वन ऑफ द क्लाउजेज ऑफ सेक्शन 16 applies and the said immovable property is either directly or through an agent is in possession of the defendant. The proviso will apply only if the decree can be executed by the personal obedience of the defendant. Personal obedience here means that by some means of execution, the defendant can be made personally bound to perform the decree. For example, he can be arrested, or some debt of his can be attached, or some property of defendant can be attached and sold, etc. These are the methods by which the defendant can be personally compelled to perform the decree. And for these cases, it is not essential that the decree shall be executed directly upon the suit property. These cases are called the cases of personal obedience. Full stop. Depending upon the nature of the suit and the relief claimed, it has to be examined whether the decree of the suit can be executed by personally compelling the defendant by the above means as explained, or whether it can be obtained only by doing something with respect to the suit property concerned. So, in the former cases, former समझ रहे हो आप जो पहले लिखा हुआ, in the former cases it will be a case of personal obedience and suit can be filed as per the proviso where पहला जहाँ पे सूट प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, दूसरा जहाँ डिफेंडेंट रहता है, तीसरा जहाँ पर वर्क करता है डिफेंडेंट या फिर बिजनेस करता है, चौथा where suit property is situated, defendant resides or carries on business
or performing work for gain. Next paragraph. In a suit for a specific performance of a contract pertaining to immovable property, a part of the degree can be obtained by personal obedience, where it relates to execution of the sale deed, but where it relates to the delivery of possession, of the said immovable property, it cannot be a case of personal obedience, and hence a suit for a specific performance will fall under section 16D, but not the proviso. And hence a suit of a specific performance will fall under section 16 clause D, but not under the proviso, but not fall in the proviso. अब देखो, अरेस्ट इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया ऑफ पर्सनल ओबीडियंस. अगर उसकी आप प्रॉपर्टी को लेकर उसको अटैच करोगे और सेल कर दोगे, दैट ऑल्सो बी इन पर्सनल ओबीडियंस, उसको भी पर्सनल ओबीडियंस माना जाएगा. सो अरेस्ट इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया फॉर पर्सनल ओबीडियंस, दैट इज ओनली वन मेथड ऑफ पर्सनल ओबीडियंस. अब सूट आपका किसी एक कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में चल रहा है और प्रॉपर्टी किसी और कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में है, तो पर्सनल ओबीडियंस में यू कैन अटैच दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो. और प्रोवाइजो को आप, प्रोवाइजो इज देन एक्सेप्शन टू द सेक्शन इन सेक्शन, सो यू कैन नॉट इंटरप्रेट it widely. You cannot interpret it so that the larger scope of the section would be affected. So proviso has to be given a restricted interpretation. So it will apply only if the suit lies in one of the main categories of the section, and relief can be entirely obtained by personal obedience. Now see the explanation in this section. Property means only the property situated in India. इस पर हर्षद चमनलाल का केस है, उसको भी एक बार रीड आउट कर लेना upon this point of proviso. So that's it for section 16. Now let's start section 17. Section 17 deals with the situation where suit is under section 16 and the property is situated in more than one jurisdiction. That is saying where a suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property. So it applies where 16A till E. F से मतलब नहीं है इसको. It is related to immovable property. 16A till E. Where a suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of different courts. The suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situate, provided that in respect of the value of the subject matter of the suit, the entire claim is cognizable by such court. मान लो this is the jurisdiction of one court and this is the jurisdiction of another court. This is court 1 and this is court 2, and A has to file a suit against B under section 16, under section 16A till E, and with respect to this property, this entire property. अब इस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट कोर्ट 1 के ज्यूरिडिक्शन में है, कुछ पार्ट कोर्ट 2 के ज्यूरिडिक्शन में. Some part is in court 1 jurisdiction and some part is in court 2 jurisdiction. अब where will the A file the suit? अब A दो सूट कर सकता है, इस पार्ट के लिए अलग सूट करे, इस पार्ट के लिए अलग सूट करे, अलग अलग कोर्ट्स में. That will amount to a multiplicity of proceedings. So that is not permissible and that is not required also. So what they are declaring is he can file the suit in either of these courts. अब मान लो तुमने कोर्ट 1 में सूट कर दिया. He can file the suit in court 1 with respect to what? With respect to this property situated in court 1 jurisdiction and also with respect to this property which is situated in court 2 jurisdiction. वह पूरी प्रॉपर्टी के लिए सूट कोर्ट 1 में कर सकता है या पूरी प्रॉपर्टी के लिए सूट कोर्ट 2 में कर सकता है. He can file the suit with respect to the entire property in either of these courts. But पूरी प्रॉपर्टी का जब
सूट करेगा, पूरी प्रॉपर्टी का सूट जब करेगा, ऑब्वियसली वैल्यूएशन भी अकॉर्डिंगली होगा. सपोज दिस इज 4 acres ऑफ लैंड, 2 acres इज इन कोट 1 एंड 2 acres इन कोट 2. सिर्फ 2 एकड़ के लिए अगर सूट करता तो हो सकता है उसकी वैल्यूएशन पे इट वुड हैव गॉन टू द सिविल जज जूनियर डिवीजन फॉर एग्जांपल. लेकिन 4 एकड़ के लिए कर रहा है तो वैल्यू विल हायर, देन वेयर विल ही गो? मे बी सीनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन. अब व्हाट दे आर सेइंग इन प्रोवाइजो इज दैट द वैल्यूएशन ऑफ दिस पूरा प्रॉपर्टी, पूरे सूट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करके, पूरे सूट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करके उस कोर्ट में आप सूट फाइल करोगे जिस कोर्ट के पास पूरी प्रॉपर्टी का पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन हो. अब मान लो सिर्फ अगर वो 2 एकड़ के लिए करता है तो सिविल जज जूनियर डिवीजन से काम चल जाता, बट अगर वो पूरे 4 एकड़ के लिए कर रहा है so the valuation is higher. So in court 1 you will not go to the civil judge junior division, you will go to the civil judge senior division. Means which court is having the, it will go to that court which is having the pecuniary jurisdiction of the matter. So see it again, this is court 1 and this is court 2. ये कोर्ट 1 का jurisdiction है और ये कोर्ट 2 का jurisdiction है. Now suppose the suit property is situated in only in court 1, तो सूट कहाँ डालोगे? कोर्ट 1 में. तो फिर 17 की जरूरत नहीं है, सीधा 16 फाइल करो. But the problem here is that the property is situated here is not only in the court 1 jurisdiction, the property is situated in the jurisdiction of both the courts. Some part of the property is situated here and some part of the property is situated here. So where will you file the suit? One option you may had was, for this part of the property you will file suit in this court and for this part you will file in this court, that is in court 2, and for this court 1. But that will result into the multiplicity of proceedings, and therefore the option given by section 70 is you can file the suit with respect to the entire property. You can file the suit with respect to entire property. एंटायर मतलब दोनों के ज्यूरिडिक्शन की पूरी प्रॉपर्टी के लिए आप किसी भी कोर्ट में सूट कर सकते हो. यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको. तो ये पूरी प्रॉपर्टी के लिए सूट करेगा. सपोज रिकवरी सूट है वॉट एवर, ये ही कैन फाइल इन कोर्ट 1 और कोर्ट 2. अब जब पूरी प्रॉपर्टी के लिए सूट करेगा तो सूट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किसके हिसाब से होगा? पूरी प्रॉपर्टी के हिसाब से या फिर उस ज्यूरिडिक्शन की प्रॉपर्टी के हिसाब से? लॉजिकली पूरी प्रॉपर्टी के हिसाब से. So there what I said was कि अगर पूरी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करता है तो there it may be chances that कि वो सीनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास जाएगा. तो there he has the pecuniary jurisdiction. और सिर्फ एक पार्ट का करता है, then for example suppose that may go to सिविल जज जूनियर डिवीजन. अब मान लो एक पोर्शन का जूनियर डिवीजन के पास जाता और पूरी का वैल्यूएशन करें तो सीनियर डिवीजन का ज्यूरिडिक्शन बन जाता है पेक्यूनियरी. तो अब सूट के ज्यूरिडिक्शन में फाइल करेगा, किस कोर्ट में डालेगा? सीनियर डिवीजन में या जूनियर डिवीजन में? इट विल गो बिफोर द सीनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, बिकॉज हिज पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन विल लाई अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी. अब इसमें प्रोवाइजो देख लो आप एक बार. Provided that in respect of the value of the subject matter of the suit, the entire claim is cognizable by such court. अब मान लो उसने सीनियर जज, सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास ना फाइल करके सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास फाइल कर दिया, और जूनियर डिवीजन का पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन एक ही पार्ट तक है लिमिटेड. So obviously that is cleared by the proviso that you cannot file the suit before the civil judge junior division. आप पूरे सूट का वैल्यूएशन करके जिसका भी पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन रहेगा वो किसके पास जाना चाहिए? अकॉर्डिंगली यू विल फाइल द सूट. So it may be civil judge senior division, it may be depend upon the pecuniary value of the property and the pecuniary jurisdiction of the court. इस पे लिख लो, write down section 17 incidental upon section 16. Section 17 is incidental upon section 16 and it expressly declares that
where the suit property is situated in more than one court jurisdiction then the suit may be filed in either of those courts for the entire suit property, and it shall be filed in such a court in that jurisdiction which has the pecuniary jurisdiction for the entire suit property. For the purpose of valuation of the suit, the entire property has to be taken into account, and not only that part which is situated in that court's jurisdiction. मतलब आपको पूरी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, सिर्फ उतने पार्ट का नहीं जो उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में फॉल करती है. सो दैट्स इट फॉर सेक्शन 17. सो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 17. अब एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, दैट इज जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इन प्रोसीजरल लॉ. प्रोसीजरल लॉ आर रेट्रोस्पेक्टिव. अब देखो रेट्रोस्पेक्टिव होने का मतलब क्या है. प्रोसीजरल लॉज आर ऑलवेज रेट्रोस्पेक्टिव, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव डज नॉट मीन दैट फॉर एग्जांपल लॉ लाइक सीपीसी कम्स इनटू फोर्स इन 1908 so it will go back and apply upon all the suits which are decided. Rather it will apply to whatever suits are pending into the court. The day CPC comes into the force or any provision come into the force, from that day whatever suits are pending into the court, the provisions start to apply to those cases. तो रेट्रोस्पेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर यह है कि पेंडिंग सूट्स पर भी सीपीसी या कोई पर्टिकुलर प्रोविजन लागू होगा. सिर्फ उन पर लागू नहीं होगा जो 1908 के बाद सूट फाइल होंगे. CPC is a procedural law and it automatically will apply upon all suits, even the Evidence Act, upon all suits which are pending at the time when the CPC came into force. रेट्रोस्पेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि मान लो ये 1908 है और अब 1888 का कोई डिस्प्यूट था तो CPC को यहाँ से उठाकर उस केस पे लागू करें और केस को दोबारा रीओपन करें और फिर डिसाइड करें, तो ऐसा नहीं होगा. रेट्रोस्पेक्टिविटी ऑफ प्रोसीजरल लॉ मीन्स इट इज नॉट लाइक दिस कि आप पीछे की डेट पर ले जाकर सूट को फिर से ओपन करो. रेदर इट इज एनी पेंडिंग सूट इन द कोर्ट. मान लो 1904 में किसी ने सूट किया था और 1908 CPC वाज नॉट देयर, पहले का कोई CPC लागू होता था. 1904 में किसी ने सूट किया और 1908 में नया CPC लागू हो गया और सूट पेंडिंग है, तो उस सूट पर 1908 ऑनवर्ड्स प्रेजेंट CPC लगेगा, ना कि पुराना CPC. That is meant by retrospectivity. So it is not that the CPC will apply only on those suits which is filed after 1908. It will apply also on the suits which are already pending. So it is retrospective to that extent. But retrospective does not mean in 1908 वाले CPC में डिक्लेयर कर दिया कि ये 1850 से लागू होगा. So it is not like that. The CPC apply from 1908, from the date when it came to force. So it will apply only on the pending suits and any suit which is filed subsequently. So the retrospectivity is only to that extent that whatever suits are pending, it will start apply upon them. लेकिन अगर पहले कोई सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो उस पर वापस जाकर CPC अप्लाई नहीं होगा, फिर तो आपको सारे सूट खोलने पड़ जाएंगे जो पुराने डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं. तो इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ रेट्रोस्पेक्टिविटी. ओके, अब सेक्शन 16 में एक पॉइंट और बताता हूँ. मान लो किसी व्यक्ति के लिए चार्ज क्रिएट कर दिया, ए पर्सन क्रिएटेड ए चार्ज टू अनदर पर्सन अपॉन ए प्रॉपर्टी. अब ही वांट्स टू सेल दैट प्रॉपर्टी. मान लो बी ने चार्ज क्रिएट कर दिया इन फेवर ऑफ ए अपॉन ए प्रॉपर्टी. अब बी उसके बाद कुछ दिनों तक तो उसको चार्ज देता रहा, उसके बाद बी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है उसको. सो ही हैज टू मेक सम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट और अदरवाइज ए विल फाइल अ सूट टू इंजंक्ट हिम टू सेल द प्रॉपर्टी बिकॉज चार्ज इज स्टिल क्रिएटेड इन हिज फेवर. तो अल्टरनेटिव किसी और प्रॉपर्टी पे क्रिएट करके चार्ज
he can always sell the property. So that's it for this section and this lecture. Thank you.